Hello everyone, welcome to my channel Everything with Wills and welcome to another video. And in today's video, we're going to talk about Bismillah Rahman Rahim. So today we are going to discuss should and should have. So let's get started. All right, so we're going to start from should, though we have already done this modal verb should, but it would be very good to explain should and should have both together at the same time so that you can make the comparison that what exactly is the difference between should and should have. So should modal verb is used for suggestion, advice, duty or obligation in the present tense. तो modal verb should को हम इस्तेमाल करते हैं किसी को कोई मशवरा देने के लिए, किसी को कोई एडवाइस देने के लिए या किसी को उसकी जिम्मेदारी या उसके फर्ज को रिमाइंड करवाने के लिए किन टेंसेस में प्रेजेंट के टेंस में. Now let's see what is should have. Should have is used for regret or criticism over some past actions. तो कोई पास्ट का एक्शन जो आपने कर दिया या किसी और ने कर दिया है, अब उस एक्शन पे कोई किसी ने अमल सर अंजाम दे दिया है, उस अमल पे अगर आप पछतावा जाहिर करना चाह रहे हैं या किसी अमल पे आप तंज करना चाह रहे हो तो शुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट में, इन द पास्ट टेंस. इसमें देयर इज one confusion that I've seen most of the teachers and the students they do, that they think that should have can be used for advice or suggestions in the past. उनको ऐसा लगता है कि जैसे शुड प्रेजेंट में सजेशन या एडवाइस के लिए यूज होता है, जैसे तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो उनको लगता है कि शुड हैव माजी के किसी अमल पे सजेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, उसे नमाज पढ़नी चाहिए थी. हरगिज नहीं. नसीहत हमेशा किसी ऐसे अमल के लिए होती है जो आपने अभी तक नहीं किया. Something that you have not done yet, you can only give the advice. But something that you have already done, you can't advise. Now, you cannot give advice to someone on something that he has or she has done. Now, you can either regret or criticize. तो कोई अमल हो गया, उस पे कभी भी एडवाइस नहीं दी जाती. एक अमल हो गया है ना, अब उस पे या तो पछतावा जाहिर किया जाएगा या क्रिटिसिज्म यानी तनकीद की जाएगी. मसलन अगर मैं कहूं कि यू शुड हैव परफॉर्म्ड प्रेयर, तो मैं नमाज पढ़नी चाहिए थी, यहाँ मैं पछतावा जाहिर कर रहा हूं कि तुमने गलत किया, पछतावा जाहिर कर रहा हूं कि तुमने नहीं पढ़ी, गलत किया, पढ़नी चाहिए थी. ही शुडंट हैव इंसल्टेड यू, उसे तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ मैं तनकीद कर रहा हूं उसके अमल पे कि उसने जो तुम्हारी बेइज्जती की वो गलत काम किया. सो should is used for suggestions, advice, duty or obligation in the present tense. Should have is not used for advice in the past or suggestion in the past. Should have is used for regret or criticism over some past action. ठीक है जी. Now let's see the examples that would give you the clear picture. Now the examples of should. You should stop eating fast food. तुम्हें fast food खाना stop कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए. Should I learn English language? Suggestion है, किसी से suggestion ले रहा है, मशवरा ले रहा है कि क्या मुझे English language सीखनी चाहिए. I should not trust them. मुझे उन पे trust नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए. You can also use the contraction of should not as shouldn't. You can use either shouldn't, which is a short form, the contraction form of should not, or you can use should not complete, two words. All right, the last example is you should help needy people. तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए. Now let's see the example of should have. I got really wet walking home last night. I should have taken an umbrella. मैं कल घर से वापस आते हुए पूरा भीग गया, मुझे साथ एक छतरी ले लेनी चाहिए थी, साथ एक छतरी रख लेनी चाहिए थी. Now this is regret. You are regretting over something. आप पछता रहे हो कि आपने क्यों छतरी अपने साथ नहीं रखी, वरना आप नहीं भीगते. Number 2 is I should have called you sooner. मुझे तुम्हें जल्दी बुला लेना चाहिए था, मैंने तुम्हें देर से बुलाया. Now again you are regretting over it. आप इस पे पछता रहे हो कि मैंने जल्दी क्यों नहीं बुलाया. Example number 3 is you should have spoken to me before deciding. You should have spoken to me before deciding. Decide करने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी. Now you are criticizing. You are criticizing on his action.
ये यू के एक्शन पे आप तनकीद कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं, बात क्यों नहीं कही डिसाइड करने से पहले. The example number 4 is she knows it's very busy. She knows it's a busy restaurant. She should have reserved the tables. उसे मालूम है कि ये बड़ा ही मसरूफ रेस्टोरेंट है, उसे आने से पहले टेबल रिजर्व बुक कर लेने चाहिए थे, रिजर्व कर लेने चाहिए थे. अगेन यू आर क्रिटिसाइजिंग ओवर हर एक्शन. आप इस शी के एक्शन पे क्रिटिसाइज कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तनकीद कर रहे हो. So I'm sure now you have come to know what exactly is the difference between should and should have. Should is a modal verb. Should have is the past form of the modal verb should. And where we use should and where we use should have is a very clear picture in front of you, a very clear explanation with the examples. I hope you have understood it very well. And if you have really understood, so now it is your turn to make sentences. And if there is any mistake in your examples, in your sentences, I will get back to you in the comment section. Till then, take the very best care of yourself. Bye bye.